Why Remax? Nobody in the world sells more real estate than Remax. That's a fact. So it's no surprise that when you join Remax, you become part of the world's most productive real estate network of more than 120,000 agents. Can a brand name make a difference? You better believe it can. The Remax brand can help you do big things for your career. Top brand awareness means buyers and sellers know you before they've met you. When you're with Remax, you need no introduction. At Remax, you're shoulder to shoulder with career-minded quality pros. When you walk among top producers, you'll be inspired to grow your business. Check out the numbers. Now you know why more buyers and sellers would recommend Remax than any other real estate brand. There's a world of opportunity at Remax agents' fingertips. The Remax network spans over 100 countries and territories. International business can be your new reality. All over the world, Remax agents translate global connections into sold. At Remax, you'll find new ways to help you get ahead. Think mobile apps, iPad presentations, and Remax.com, which draws massive traffic and serves as a springboard for fee-free leads. Every tool is designed to help make your business more streamlined and effective. How's this? 3,000 leads delivered to agents every day without referral fees. The Remax online system connects buyers and sellers directly to you. It's generated 18 million fee-free leads to the network. The leads come straight to your phone, and you take it from there. The more you learn, the more you earn. With the push of a button, you can stream over 1,000 videos and more than 70 designations and certifications via phone, tablet, or Google Chromecast from Remax University. Great things happen when Remax agents get together. From the unforgettable R4 convention on the Vegas Strip to international niche events, you'll have next-level access to invaluable learning and networking opportunities worldwide. At Remax, group buying power is what gives rise to the world-class promotions that earn consumers' attention. From TV to social media, advertising is part of the reason Remax is the #1 name in real estate. This balloon has clout. Why Remax? It's time to see for yourself. Good evening, friends, and welcome to Remax India. I'm Gaurav Maurya, the Managing Director and CEO for Remax India. This is a very special webinar because we're inviting our affiliates and associates who would work with Remax India across India. We have offices, and we are looking for very dynamic and strong professionals who would join Remax and start their entrepreneurial career in the world's #1 real estate broking company. So what we're going to do in this webinar, this is going to be about 30-minute webinar, which we want to make it very, very interactive. So you are able to get answers on everything which comes to your mind. So you can use the Q&A box. There is a Q&A box at the bottom and ask any question. And I will be happy to answer that question. More we'll make it interactive, more I will be able to answer your questions, and you will get valuable information out of this webinar. So what are we going to cover in this webinar? We're going to cover about Remax journey, what is brand, because a lot of you would know Remax, but some would not know. So I have to introduce you to the brand Remax. We'll also talk about real estate, because that's also very important to understand what is happening in real estate and why at Remax we are super excited. We feel that the time for next 4 or 5 years is a golden era in Indian real estate space. So why it is so important from a timing viewpoint. Then we'll talk about why people sometimes don't succeed so much when they join real estate and what are the challenges in the entire thing. Then I'll talk about what is important to build a successful broking career. If you want to be a successful, while from outside, we all know that real estate people make a lot of money in real estate, but how do you build that? It's very important. What it requires to build that is also very important. So I'll touch upon that. I'd rather spend more time on that piece. And then we'll get on to a little more discussion, how we can work together, how you can join us. So friends, my first question to all of you is a very important question. Do you want me to continue in English, or I should speak in Hindi also, or mix both? So if you can give me an answer that, this will give me
a little direction that what is the preference of the audience. Okay, so if somebody says mix, somebody says English, says any language. I know very few languages, but the English and Hindi are something which I speak. Okay, so most of the time people are talking about mix. Okay, that's good. That's it's going to be a good session. So a lot of people are interactive, so they're sharing. So that's a very good sign. Sometimes I go to webinars and I've done 1,500 webinars in different parts of my company. And sometimes you have 150 people sitting on the webinar and nobody really talks to you. So sometimes I get surprised why they're there if they don't want to talk. And good evening, Victor. Good evening to you. And so great. So some of you would know me, but some who don't know me, I will like to first introduce myself. And then I will like you all to also introduce yourself. But let me start giving you my introduction. You know, I started my career way back in 94 in telecom. So that time telecom was just coming. And I came from a, no background of business. My father had a business, but I had no experience. And this was out of my education, I had to start something. So I started telecom. The only thing which I was very clear that I want to do something which is just beginning to happen. Because when you join anything at the start, when it's going to be, you always succeed. You always come at the top because it's just happening, right? So I joined telecom, not as a job, but as an entrepreneur. I never did job in my life and became very successful. In 4 years, my company was number one. I was doing both, working with SR on their voice side, and I was working on a lot of hardware companies. Rather, I was the first importer of CDMA phones in India. The CDMA phones, which we all know, Reliance launched a 500 rupee phone. Much before Reliance launched that, I was the first importer of those phones to India. And even MTNL, some of you would know, launched a Garuda phone. That phone was launched on my platform. So I gave the phone, and that's how it started. So this was my first journey. So वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, वहाँ से मेरी journey शुरू हुई. And then I, in 99, started a company called Franchise India. Franchise India, क्योंकि मैं हर रोज अपने लिए भी कुछ नए बिजनेस ढूंढता रहता था, तो मुझे लगता कितना मुश्किल है इस देश के अंदर कि अगर किसी को अपने लिए कोई बिजनेस करना है तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था. मतलब या तो आप किसी दोस्त को फॉलो करोगे या किसी फैमिली मेंबर को फॉलो करोगे, या कभी कभी दूर से दिखती हुई चीज को मान के हम भी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन शायद वो हमारे लायक ना हो. बट कोई ऐसा एडवाइजरी सेशन ही नहीं था, कोई कंपनी नहीं थी जो आपको राइट बिजनेस दिला सकती. So it was very difficult, and it was very, very difficult for any entrepreneur to start. हम बात करते हैं स्टार्टअप की और इसकी, लेकिन आज भी अगर आप देखें हिंदुस्तान में कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जो आपको अपने लिए क्या बिजनेस करना है वो गाइड कर सकता है. अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो 1 मिलियन ब्रोकर हैं जो आपको हेल्प करेंगे. आपको शेयर मार्केट में पैसे लगाने हैं तो 1 मिलियन लोग हैं. लेकिन अगर आपको अपने लिए बिजनेस करना है, आपको 20 लाख रुपए हैं, आपको अपने लिए व्यापार शुरू करना है, तो कोई कंपनी नहीं है. तो वो अपॉर्चुनिटी को देखकर मैंने फ्रेंचाइज इंडिया शुरू की, जो इंडिया की सबसे बड़ी स्टार्ट योर ओन बिजनेस प्लेटफॉर्म बन पाई. 1200 लोग काम करते हैं, 94 सिटीज में मेरे ऑफिस हैं, और ये इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिजनेस ब्रोकिंग कंपनी बनी. तो ये मेरी स्ट्रेंथ थी, और मैं कभी भी हेजिटेट नहीं करता था. मुझे लोग बोलते थे कि आप अपने आप को बिजनेस ब्रोकर बोलते, तो मैंने कहा यही तो मैं करता हूँ. लोगों को बिजनेस दिलाता हूँ, किसी को कोई अपॉर्चुनिटी दिलाता हूँ, किसी को कोई अपॉर्चुनिटी दिलाता हूँ. आज फ्रेंचाइज इंडिया मैनेजेस अबाउट we are managing almost about 1,000 plus brands. 1,000 brands we manage, and we manage a lot of investors who are there, and they are working with us. So friends, this was my journey, and in this journey there was a time where I got a very interesting opportunity to really work with as a client, and that was Remax. 2008 में सैम चोपड़ा जो इस कंपनी को इंडिया में लेकर आए, रीमैक्स को, he brought the business to India, and he actually researched 2 years before he approached the Remax company. And Remax also took 2 years actually doing evaluation on India, that India is right to enter this time or no. And it was only in 2008 they gave approval, and this was 76th country in the world which Remax entered.
और रीमैक्स जब भी किसी कंट्री में एंटर करता है तो वो क्लियरली कुछ सिम्टम्स को देखता है. एक तो रियल स्टेट कहाँ जा रही है, ऑर्गेनाइज हो रही है, रेगुलेट हो रही है. And that was a time where RERA planning started happening. That RERA should be there. Like जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर सेबी है, ऐसे रियल स्टेट के अंदर रेरा है. रेरा इज नाउ बिकम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. इट्स बिकमिंग एंड चेंजिंग द होल इंडस्ट्री नाउ. सो दैट वाज हैपनिंग. सेकंड, दे सॉ व्हाट इज अ कंज्यूमर वांटिंग. कंज्यूमर सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी. अब जो होम बायर है वो क्या, उसकी परेशानी क्या है? उसकी परेशानी थी कि वो जो लोकल ब्रोकर से काम कर रहा था, ना उसको ट्रस्ट मिल रहा था, ना ही उसे कोई वो मिल रहा था. रादर देयर इज अ सर्वे व्हिच हैज बीन डन दैट 70% ऑफ पीपल, 70% of people who bought property from a local broker, somebody who's run I think, they felt they were not satisfied by the services of the broker. ये वो लोग नहीं है जिन्होंने नहीं ली. बहुत सारे ऐसे होंगे जो आएंगे जो लेंगे नहीं. उनका फीडबैक नहीं है, ये फीडबैक उनका है जिन्होंने प्रॉपर्टी ली. राइट. सो दैट्स हाउ दिस अपॉर्चुनिटी is all about. And Victor, I will give you answers later. I'm in the middle of webinar, so anything which is relevant to, please, you can use Q&A box. So, so that was a time where opportunity it started, and that is a time where I also started working with Remax and felt that we can work on this business and really take the business to the next level. And that's how my journey really started. And and then in 2017, there was a time which came in when Sam Chopra came to me that Franchise India would like to invest into Remax. And that is the time I decided to invest in Remax. And now I drive Remax as CEO and Managing Director, and 51% of Remax India is also owned by Franchise India Group. So Franchise India Group now is the biggest business broking company and also the biggest real estate broking company with Remax. Today, Remax India has 240 offices, 1,500 people work across India under Remax. So that's the size of the business which we already have built. But Remax is much, much larger as an organization. बहुत बड़ी कंपनी है ये 1973 में शुरू हुई. डेव लेनेगर ने इसको शुरू किया था. डेव लेनेगर दुनिया के पहले 5 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों में माने जाते हैं इन रियल स्टेट. इन 5 बड़े लोग जो रियल स्टेट में, उनके ऊपर कई किताबें लिखी गई हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ी किताब है उनके बारे में विच इज कॉल्ड गुड टू ग्रेट. गुड टू ग्रेट इज बेस्ट सेलर विच टॉक्स अबाउट हिम. एक और उन्होंने खुद किताब लिखी है which is also very very popular, and that's also Everybody Wins. That is a book called Everybody Wins. It's a very popular book. Amazon पे available है, कोई पढ़ना चाहे तो उसको ऑर्डर कर सकता है. So this company is a phenomena. Why I say phenomena? 120 कंट्रीज में एग्जिस्ट करती है. वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है जिसको लोग पहचानते हैं रियल एस्टेट के लिए. वर्ल्ड का नंबर 1 मार्केट शेयर होल्ड करता है. इसकी टैगलाइन है, नोबडी सेल्स मोर रियल एस्टेट देन रीमैक्स. And this is a public listed company. To make statement like this, it should be also backed by the real data. So nobody in the world sells more real estate than Remax. And real estate is one of the biggest contributor to any economy in the world. So see how influence this company keeps on overall industry and the economies. कुछ countries में 30% से ज़्यादा market share है. Like Canada, it has 30% or more market share. मतलब हर तीसरी प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी कनाडा में, कुछ जोन्स में दूसरी प्रॉपर्टी, हर कई जोन्स में तीसरी प्रॉपर्टी रीमैक्स के थ्रू बिकती है. दैट्स द पावर ऑफ द ब्रांड. एंड दिस इज नॉट ओनली कनाडा, दिस इज ऑल्सो हैपनिंग इन ब्राजील, दिस इज हैपनिंग इन पोर्तुगल, दिस इज हैपनिंग इन साउथ अफ्रीका, दिस इज हैपनिंग इन इजिप्ट, दिस इज हैपनिंग मंगोलिया, दिस इज हैपनिंग इन कोरिया. सो एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, इफ यू सी द वर्ल्ड मैप, outside one country which Dave Leneger didn't wanted to go, now they've approved that also, is Russia. Because उस टाइम रशिया और अमेरिका के रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने रशिया नहीं गए. बाकी जितने भी कंट्रीज जा सकते थे जहां पर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी और इकोनॉमी इवॉल्व थी, उन सब कंट्रीज में रीमैक्स एग्जिस्ट. एंड रीमैक्स इज जस्ट एंटर्ड इवन पाकिस्तान आफ्टर 10 years of 11 years of India business. Now they have approved Pakistan, and somebody has taken Pakistan also from them. So this is a company which is a very very big company. So Remax
एक बहुत इस्टेब्लिश्ड, बहुत डीप ऑर्गेनाइजेशन है, और ये सारे एंटरप्रेन्योर्स की बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन। 120 कंट्री में 1,42,000 लोग, 1,42,000 पीपल वर्क फॉर रीमैक्स, एंड दे वोंट वर्क एज एम्प्लॉइज, दे वर्क एज एंटरप्रेन्योर्स. So this company I love because it encourages entrepreneurship, which is very important. You have to encourage, because if you have an employee culture, you don't do anything in real estate. If you are an entrepreneur, you make big goals in life. So this is an entrepreneur organization. Second thing, it is a very local multinational. It understands local subject. Everybody who works in Remax works in a particular region, works like understanding the local market. लाइक अ लोकल ब्रोकर डज. आपका लोकल ब्रोकर भी आपको समझता है, आपकी बात को समझता है, आपकी लैंग्वेज को समझता है, अपने नेबरहुड को जानता है, लेकिन वो सिर्फ लोकल होता है, उसके पास और वैल्यूज नहीं होती. तो जितनी भी मल्टीनेशनल की वैल्यूज हैं, जिससे नेटवर्क हो गया या वर्ल्ड इन्वेंट्री हो गया या और टेक्नोलॉजी हो गया, वो सारी चीजें मल्टीनेशनल से मिलती हैं, और जो आपकी कंट्रीब्यूशन होती है वो उसके अंदर लोकल वैल्यूज लाती है, वार्मथ लाती है. So it's a combination of best practices and warmth. Warmth comes from your local ability, and best practices come from being a multinational. So these are rings why I got attracted to Remax and I invested into Remax. And my own journey has been, a lot of people ask me why you came to Remax. I say for two things. One, I love brokerage. मैंने सारी जिंदगी ब्रोकरेज ही की है. पहले बिजनेस के लिए करता था, अब रियल एस्टेट में करना है. Second, I have always had passion to be part of real estate. Somehow I wanted to be involved in real estate because I knew that in last 200 years, 300 years, हिस्ट्री उठा के देखो आप, किसी ने भी पैसा कभी कमाया है, कोई भी वेल्थ क्रिएशन हुई है, तो उसमें रियल एस्टेट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था. I have not seen anybody who's not made money. Even people like Warren Buffett, who looks like somebody who understands equity well, has a very large investment in real estate. He holds a lot of assets. He rather runs a company like Remax also, which does real estate broking. That's also been done by Warren Buffett. So Warren Buffett अपनी भी एक कंपनी चलाते हैं जो Remax की तरह है, लेकिन बहुत छोटी है, जो ब्रोकिंग करती है. Remax is a very big number, and because his interest is also in real asset, because real estate is a real asset, it would always grow, and you will always have opportunity to make money. Now let's get into a very important aspect is what is happening in real estate. क्या हो रहा है रियल एस्टेट के अंदर, ये बहुत जरूरी जानना है. अगर आप देखें पिछले 5 से 6 साल में हम बात कर रहे हैं कि रियल एस्टेट वहीं है, स्टैग्नेंट हो गई है, ग्रो नहीं कर रही है. लॉट ऑफ पीपल कंप्लेन दैट द इंडस्ट्री इज नॉट ग्रोइंग इन द वे इट शुड ग्रो, राइट? And on the other side, we seeing almost every large corporate of India entering real estate in last 8 years. Adani, Reliance, Godrej, L&T, Shapurji Palanji, Shriram Property जिसका कल IPO आया. Almost every corporate, even आप regional corporates देखो, जैसे Hero Homes in North India, which is a Hero Motors company, some other company, Imami in East India, all corporates have entered the market. Now, what is it signifying? It is signifying that the industry is consolidating, and also the big boys are coming in. So almost every large corporate, Birla also announced, Tata Housing has announced. So everybody has entered real estate. Why they've entered? Because they know this industry would now change. The fragmented independent builders would no more be relevant. And people would have more trust on investing into these corporate trademarks, where people know that when you are investing with Godrej, you can trust. When you're investing with Tata, you can trust. You will get the same product. Now, this change is a big change. This is corporatization of real estate. When corporatization of real estate would happen, then broking also have to change. जब fragmented builder थे, तो fragmented broker थे. एक local builder है, उसी के आसपास काम करने वाले उसके broker. अभी जैसे डेवलपर कंसोलिडेट हो जाएंगे, और ये इंडस्ट्री आज की डेट में, पहले 8,000 लोकल डेवलपर्स होते थे, घट के अब सिर्फ 2,500 एक्टिव डेवलपर्स हैं जो एक्टिवली डेवलप करते हैं प्रॉपर्टीज. अब वो 2,500 से में से भी जो पहले 100 ब्रांड होंगे, जिसमें गोदरेज, टाटा और ये सब कंपनीज होंगी, वो ऑलमोस्ट 50% मार्केट शेयर ले लेंगी. तो 50% प्राइमरी की इन्वेंट्री का पहले 100 डेवलपर के थ्रू ही आएगा, जिसमें कुछ रियल एस्टेट के भी लार्ज कॉर्पोरेट्स होंगे लाइक DLF, प्रेस्टीज, शोभा, पूर्वंकरा. These are all also going to be there. But technically 100 बिल्डर टोटल इस इन्वेंट्री को मैनेज करेंगे. 50% फ्यूचर इन्वेंट्री जो आएंगी ये 100 डेवलपिंग हाउसेस से आएंगी.
अगर ये होने वाला है इस अपॉर्चुनिटी के अंदर, तो रियल एस्टेट ब्रोकिंग को भी ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। आज एक डेवलपर एक कंपनी के साथ काम करे जिसके पास पूरा नेटवर्क हो इंडिया के अंदर, तो दे इट सॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बिकॉज अब गाइडलाइन ऐसी है कि डेवलपर भी नॉन रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ काम नहीं कर सकता, तो उसको रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर ही चाहिए। अब हर रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर है नहीं, इंडिया में 1 मिलियन ब्रोकर हैं आज की डेट में, डेटा आप चेक कर सकते हैं, सिर्फ 40,000 रजिस्टर्ड है, 40,000 आर ओनली रजिस्टर्ड अंडर रेरा। सो विच मीन्स 1 मिलियन, 10 लाख ब्रोकर्स में से सिर्फ 40,000 लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई। अगर उनको ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के साथ काम करना है तो दे कैन नॉट इवन वर्क, बिकॉज आपका चेक भी नहीं बन सकता है जब तक आप अपना रेरा नंबर नहीं डालते। तो it is going to be impossible for these independent brokers to survive if they don't really become a part of a larger network. And Remax, fortunately, is already the largest network in the country. हम largest network हैं, already 64 cities में हैं, और इतना बड़ा network, 1,500 people are already working in Remax. Now, less important, when this industry is changing, why is this industry is changing? तो मैंने बताया कि ये इंडस्ट्री डेवलपर की तरफ से ऑर्गेनाइज हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा चेंज कहां से आ रहा है? सबसे बड़ा चेंज आ रहा है कंज्यूमर की तरफ से। कंज्यूमर मांग रहा है व्हाट आई कॉल द सीपीयू। इट वांट्स वन, क्रेडिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंज्यूमर जब एक ब्रोकर को देखता है, या आज का ये यंग है, जैसे पूना और बॉम्बे में और बैंगलोर में आप देखें, सबसे ज्यादा परचेज करने वाले कौन लोग हैं? आईटी काम करने वाले। उनकी ड्यूअल इनकम होती है, तो दे वांट टू बाय अ फ्लैट। इफ दे वांट टू बाय अ फ्लैट, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क एनीबडी, बिकॉज दे हैव नो रेफरेंस पॉइंट। वो कहीं और से आए हैं, बाहर से आए हैं, किसी और स्टेट से आए हैं, और वहां पुणे में रहते हैं। दे आर गोइंग टू जस्ट गूगल हु इज गोइंग टू हेल्प मी, एंड व्हेन दे फाइंड देयर इज अ लोकल ब्रोकर एंड देयर इज अ Remax, which is world's #1 company, who are they going to choose? They're going to choose Remax. So that's the power of the brand. That's the power of the brand which comes with Remax. So it's a very, very strong proposition today, especially in the world of digital world. डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जो भी आप दिखाते हो, वो सब फेसबुक हो, इंस्टा हो, लिंक्डइन हो, या जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब प्लेटफॉर्म्स पे इफ यू आर अ ब्रांड, यू गेट मोर रिकग्निशन, विच मीन्स द सेकंड थिंग, सीपीओ का पहला सी, क्रेडिबिलिटी, दूसरा है पी, परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है, क्योंकि अगर मैंने लिस्टिंग की और उस लिस्टिंग में 2 BHK की पिक्चर डाल के मैंने लिस्ट किया और कहा गौरव मारिया एज अ ब्रोकर, एंड सेकंड लिस्टिंग इज डन प्रोफेशनली, ब्यूटीफुली डिजाइन विद नाइस ब्रांड गाइडलाइंस, and this is under Remax, and Remax is world's #1 company. Nobody sells more real estate than that. Who's going to get more clicks? This would get more clicks. This would get more impression. This would get more lower cost of lead generation. This would always be higher, right? And third is user experience. User experience is going to be a big difference, क्योंकि property दो broker के पास same है, same property है, लेकिन why you would choose A over B? Because you get a better experience, you get a better professional, somebody who's more trained, who's well presented. All our agents and affiliates are wearing business suits to go to meetings. They are presenting the property beautifully. Because they're doing that, they give a very different user experience. So this is all about CPU, credibility, better performance, and user experience. And because we do that, because we bring in this, a lot of people ask me what is the difference, why I should be with the Remax and that. It's like people asking, and why should I go to a non-branded hotel to a Marriott? Why should I go to a local restaurant to a McDonald's? Why should I go to a small coffee shop to versus Starbucks? Brand plays a very, very important role. You go to Starbucks and pay 500 for a coffee, and outside you don't give even 50 rupees, because you get that experience. So brand plays a very, very important part. Now let's get into very important part, is that a lot of people have aspiration to join real estate. A lot of people, I think almost every second person you meet, उसको कुछ ना कुछ रियल एस्टेट में करना है। मेरे को, मैं जिससे बात करता हूँ, जब से मैंने Remax में इन्वेस्ट किया है, व्हाट डू यू डू, यू हैव समथिंग इंटरेस्ट इन Remax, ऑलमोस्ट 100% लोग कहते हैं हाँ कुछ ना कुछ है। कोई इन्वेस्टर होते हैं, कुछ और कर रहे होते हैं, कुछ साइड में कर रहे होते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, कुछ को रेंटल के लिए करते हैं, लेकिन हर इंसान का कुछ ना कुछ लेना देना रियल एस्टेट के साथ जरूर होता है। सो बहुत लोग ज्वाइन भी करते हैं। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि अगर 100 लोग ज्वाइन करते हैं, 100 people join real estate, 90 fail. Now on one side I'm saying big industry, everything happening, another side I'm giving a statistics that
If 100 people are joining real estate, 90 fail in the first year itself. First year itself. पहले साल में वो real estate छोड़ के कुछ और करने लगते हैं. और जो 10 सर्वाइव करते हैं उसमें से 5 जो हैं 5% would become part time, which means that they would do something else also, लेकिन साथ साथ रियल एस्टेट भी करते रहेंगे. कभी कभी मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, कुछ अपना एक आइसक्रीम पार्लर बनाया, अमूल का फ्रेंचाइज लिया, लेकिन साथ में रियल एस्टेट का भी लिखा है. तो पूछता हूँ भैया अमूल बेचते हो, इसमें तो कुछ बचता ही नहीं होगा और रियल एस्टेट का काम तो बहुत बड़ा है. तो बोलेगा हर जरूर तो डील होती नहीं है, कभी कभी होती है, तो इसलिए साथ साथ अमूल भी लगाया हुआ है. बट ट्रुथ इज that he's become a part time. He saw some thing, but he was not able to build consistency. His deals were not coming. Sometimes he get lucky, he gets deal, sometimes he's not. While he wants to continue because he knows he can make big money in that, which he will never get in Amul business. But he also has to survive his everyday living, so he's doing something on the side. And the 5% only, which are the entire thing, stay full time and they become very successful. This is a statistics of industry. Now ask me why these 90% people fail. Why they fail? Because this market is overcrowded. इतने ब्रोकर हैं, हर आदमी प्रॉपर्टी बेचने निकला हुआ है. आप अपने घर से कहीं जाते हैं 3 किलोमीटर में तो कम से कम 50 ब्रोकर्स को आप पास करेंगे. You're passing through 50 brokers and all of them are your competition. So when you start, you actually are crowded by so much of competition that you fail. You're nowhere able to compete. Nobody trusts you because you're a new one. No, you have no history, no background. Nobody wants to give your own property to sell to you because you have no background. So if you go to somebody and say, I won't sell your property, they were not going to give. They want to ask you, what have you done in the past? What property you've sold? And if you have sold nothing, this is your first day, people are not going to trust you. So because of this competition, it gets frustrating for people and people leave. And today we invited all of you that you can now gate crash and come in the front because you're going to be part of world's #1 real estate broking name. Now let's understand what is an advantage Remax. What advantage comes to you when you become part of Remax? Okay, before I go there, let me ask a very basic question to all of you. And please give me 100%. Almost everybody should answer because this is a qualifying point for me. How many of you are professionals? Carefully understand, professional means that you're in job. आपको job कर रहे हैं. How many of you are professionals? Write P. Just write P. How many of you are business owners? कोई और business चल रहा है आपका, तो आप लिखिए B. Right? How many of you are already into real estate? लिखिए R. कुछ ना कुछ आप रियल एस्टेट में कर ही रहे हैं अभी. और हाउ मेनी ऑफ यू आर इन करियर चेंज, व्हिच मींस अभी आप कुछ नहीं कर रहे, नया कुछ देख रहे हैं अपने लिए, लिखिए सी. तो फर्स्ट लिखिए प्रोफेशनल इफ यू आर प्रोफेशनल, इफ यू आर बिजनेस ओनर राइट बी, इफ यू आर डूइंग रियल एस्टेट राइट आर, एंड इफ यू आर इन करियर चेंज राइट सी. So good to see a lot of people writing. So keep writing. I'm just looking at everybody's response. It's very important for me to get a lot of R's actually. Very, very good to see a lot of R's. And because you will all understand what I'm saying, आप सब समझेंगे कि मैं क्या पता नहीं क्या पेन की बात कर रहा हूँ, कहाँ है पेन वो. और बहुत सारे सी भी हैं. Very interesting, very good audience. Exciting to see all of you. Great. So it's a good mix of people, which is largely real estate. And now my friends from real estate, no offense, but they know what they miss when they work independently. जब वो independent काम करते हैं, तो वो क्या मिस करते हैं और जो Remax में आने पर आपको क्या बेनिफिट मिलता है. सबसे पहली चीज मैं बोलूंगा the brand itself. बहुत लोग पूछते हैं ब्रांड से क्या होगा, ब्रांड से क्या होगा, ब्रांड से क्या मिल जाएगा मुझे. और मेरे से हम बहुत सारे जो मिलने आते भी हैं वो पहले आके बोलते हैं आप लीड देंगे, आप ये करेंगे. मैं बोलता नहीं, मैं आपको ब्रांड दूंगा. तो फिर वो बोलते हैं नहीं ब्रांड से क्या होगा, ब्रांड तो कुछ करेगा नहीं. और मैं उनको ये बोलता हूँ कि ब्रांड ही सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है. इफ यू रियली नो, एवरीथिंग चेंजेस विद द ब्रांड. द वे पीपल मीट यू, द वे यू ओपन अप अपॉइंटमेंट्स, द वे यू रीच आउट टू पीपल, योर सोशल स्टेटस, your even personal status in your family changes because now you are part of world's #1 brand and a multinational.
सब कुछ चेंज हो जाता है। मैं एक दिन के लिए चंडीगढ़ आया, तो चंडीगढ़ का सबसे बड़े डेवलपर को मैंने अपनी टीम को बोला कि उसको एक मेल लिखो कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल एस्टेट ब्रोकिंग कंपनी CEO वांट्स टू मीट यू। In 1 hour, I got an appointment return back from his entire thing. His guy was standing downstairs to take me directly to the chairman's office. And we had a 20-minute meeting. After a meeting, he called me again. He says, where are you? Can we have a drink in the evening and sit down? And this is number one developer. And it's not that he knew me or मुझे जानता था, वो Remax को जानता था, इस लोगो को जानता था. He knew the power of the brand. So brand is the first most thing which everybody struggles when he starts independent business. मैं सबको बोलता हूँ कि मेरी फ्रेंचाइज इंडिया बहुत लोग जानते हैं, मैं फ्रेंचाइज इंडिया प्रॉपर्टी बना लेता, लेकिन तब भी फ्रेंचाइज इंडिया प्रॉपर्टी रीमैक्स कभी नहीं हो पाती, क्योंकि रीमैक्स तो वर्ल्ड नंबर 1 ब्रांड है, राइट? सो इफ यू वांट टू बी विद अ टॉप ब्रांड व्हिच चेंजेस योर पोजीशन इन योर सोसाइटी, in the network you work, and especially for my friends which are from real estate, this is a big pain. We don't discuss this, but I know social status, society में status सब बहुत मुश्किल होता है एक रियल एस्टेट ब्रोकर के लिए अगर वो इंडिपेंडेंट काम करता है। बहुत मुश्किल हो जाती है अपने आप को एस्टैब्लिश करना, और वहां पर अगर आपके पास एक अच्छा ब्रांड है, इट ओपन्स अप एंटायर थिंग, एंड स्पेशली फॉर पीपल हु हैव नॉट एक्सपीरियंस इन रियल एस्टेट, उनके लिए तो बहुत ही बड़ा एंट्री पॉइंट है, बिकॉज उनको तो स्टार्टिंग पॉइंट ही ये चाहिए कि कोई ब्रांड मिले जिससे कुछ काम शुरू कर पाए। So brand gets you pre-sold customers. We don't, sometimes we make an effort to get to a customer, but when we introduce, we take half a minute to introduce, the trust goes across. जो आप बहुत मेहनतों में बहुत सालों में बनाते हो, वो आप आधे मिनट के अंदर बना सकते हो किसी को कह के कि this is my company and this is structure, and this company has mastered that. Second thing which independent real estate brokers miss is network. Network is net worth. अगर आप सब ब्रोकिंग में हैं या जाना चाहते हैं, एक बात आप याद रखिए, जितना नेटवर्क आप अपना बनाएंगे और मैनेज करेंगे, उतना ही बड़ा आपका बिजनेस बनेगा। सो नेटवर्क इज योर नेटवर्क, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग, स्पेशली फॉर पीपल हु हैव नेवर डन रियल एस्टेट, इवन पीपल हु हैव डन रियल एस्टेट इज चेंजिंग. It's changing, it's becoming financial investment products, different things are coming in, fractional ownerships are coming in now, different segments are growing, warehousing is growing like crazy. आजकल हर जगह वेयरहाउसिंग बढ़ रही है और वेयरहाउसिंग का हो रहा है। आज मेरी मीटिंग थी किसी से जो डेटा सेंटर्स डालना चाहते हैं, 50 उनको डेटा सेंटर डालने सिर्फ नॉर्थ इंडिया में। सो लॉट ऑफ न्यू एसेट क्लासेस आर कमिंग इन, सो यू नीड मेंटरशिप, you need somebody to guide you, somebody who takes you in that. Fourth is inventory. Inventory is a big challenge for an independent broker. Inventory नहीं देता है डेवलपर। अभी मेरी कल गुड़गांव के बड़े डेवलपर हैं वाटिका, उनसे बात हुई। Big developer, reasonable assets, ready to move in commercial properties entirely. He told me, sir, you take time out 2 hours, I'll show you all my properties and then you select what you want to take mandate on. आप ले लो mandate करने के। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट ब्रोकर है तो उसको ओनर कभी बुलाएगा नहीं ऐसे करके, क्योंकि उसको पता है कि जा मेरी 1-2 प्रॉपर्टी बेच पाएगा। बट व्हेन दे सी द नेटवर्क, they want to really give that best inventory. So inventory comes to us, we don't go to inventory. Rather, जब AOP साइन हो रहे थे अप्रैल में, जब कंपनीज साइन कर रही थी अपने वो करने के लिए, तो हम मना कर रहे थे। हमने 28 कंपनीज के साथ ही किया, लोधा के साथ किया बॉम्बे में, शाहपुर जी के साथ किया, गोदरेज के साथ किया, पूर्वंकरा के साथ किया, प्रेस्टीज के साथ किया, M3M के साथ किया। बहुत सारों को मना किया हमने, क्योंकि हम हर को कमिट नहीं कर सकते थे, हर के साथ काम नहीं कर सकते। लेकिन एवरी सिंगल बिल्डर अप्रोच्ड अस। अब आज की डेट में ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास इन्वेंट्री की क्वालिटी क्या है। अगर आपके पास इन्वेंट्री नहीं अच्छी है तो आप क्या लेके जाएंगे मार्केट में। और अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एक ब्रोकर जो होता है वो अपने नेबरहुड में काम करता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं हो रही है। यू आर लिविंग इन गुड़गांव बट यू वांट टू बाय अपार्टमेंट इन बैंगलोर बिकॉज यू कम फ्रॉम बैंगलोर। सो हाउ अ लोकल ब्रोकर इन बैंगलोर, गुड़गांव कैन गिव यू बैंगलोर। Similarly, people are buying second home. I was yesterday with somebody and who bought a house in Goa. How can you sell a house in Goa to somebody in that thing? So inventory is a very, very important aspect. And this is a big pain with every single independent broker. Fourth is mandates. Mandates और fifth is mandates. बहुत सारे mandates भी आपको चाहिए होते हैं जिस पे आप काम कर सकते हो। जैसे आज रिटेल के अंदर मैंने बहुत strong mandates लिए हैं. That's why I'm looking for aggressively Remax कमर्शियल के एफिलिएट्स ऑल ओवर इंडिया में देख रहा हूं, क्योंकि मेरे पास अभी 300 स्टोर का मैंडेट आया जिसको मुझे मार्च तक लेना है। 300 स्टोर्स फॉर अ बिग कंपनी, आई हैव टू ओपन अप 300 लोकेशंस ऑल ओवर इंडिया। सो आई एम लुकिंग फॉर दिस मैंडेट इज एक्सक्लूसिवली विद मी।
I am only driving this directly from entire thing. Similarly, we have a mandate from Regis, which is the biggest co-working company. We have a mandate from SmartWorks, which is another big real estate broking co-working company. So many mandates are there with us. And with Franchise India, because we have exclusive rights on these brands, these mandates also coming. So I'm very clearly looking at people who understands commercial and retail leasing, so they can become an affiliate directly with Remax India. That's an opportunity. Earlier, we never had direct with Remax India, but now there is an opportunity to work directly with Remax India. So now another thing, जिन mandates को हम देंगे उस पे lead भी हम देंगे, lead की value भी हम provide करेंगे उनको support करने के लिए. So that's also becomes a very interesting opportunity. Infrastructure, another big area which a small broker can do, because या तो वो infrastructure रखता ही नहीं है क्योंकि उसको cost वारी नहीं होती. अगर वो खोल लेता है infrastructure, नॉर्मल अगर आप किसी ब्रोकर के पास जाएं जो रेगुलर काम करते हैं, उनके पास क्या ऑफिस होता है, 100 फुट का, 200 फुट का, 300 फुट का ऑफिस होता है, एक आधा ऑफिस बॉय होता है, लेकिन वो कॉस्ट उनको तंग करती रहती है क्योंकि हर महीने का 25-30 हज़ार पे रेंट जा रहा है, 20-25 हज़ार पे ऑफिस बॉय की खर्चा है जो सफाई करना है, 50 हज़ार पे फिक्स्ड जा रहा है. हम ये कहते हैं ये भी आप ना करो, ये भी हम देंगे, आप हमारे ऑफिस से ऑपरेट करो. यू ऑपरेट फ्रॉम आवर ऑफिस and we have lovely offices beautifully designed everywhere in the country. We will give you a top class office to work on that. So we have taken all major pains. We've taken pain from network, mentorship, inventory, mandates, leads, infrastructure. और उसके अलावा आपको क्या चाहिए, आपको रेगुलर मोटिवेशन चाहिए. यू वांट टू बी मोटिवेटेड, यू वांट टू लुक एट एंटायर थिंग. सो आपको पीयर टू पीयर मोटिवेशन, आपका जो ऑफिस होता है, वो हेड होता है ऑफिस का, वो भी मोटिवेशन करता है. रीमैक्स इंडिया बहुत ERR करता है और हमारे ग्लोबल अवार्ड्स होते हैं जिसमें आर पीपल गेट मोटिवेटेड एंड दे गेट लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स एंड फंक्शंस. Another area which is very important is best slabs. Slab has become a very important. Every builder gives you incremental slabs. Good part is हमारे कोई भी ऑफिस कहीं से भी लॉग इन करता है वो रीमैक्स के अकाउंट में मिलता है, रीमैक्स का नेम में. अपने अपने ऑफिस रेरा नंबर से भी डालते हैं तब भी वो कॉमन रीमैक्स में अकाउंट होता है, which means that overall slab goes up. Overall slab goes up. So which means that typical independent broker, if he's doing it at 3%, we go to 5%. And that in real estate is a big number. 1% itself changes everything. Changes everything because that would change your profitability, ability, and so on and so forth. Training is another very important. You will not find even very few, not even 1% of all brokers out there which are in any form trained. उनको रियल एस्टेट के ऊपर तो ट्रेनिंग नहीं, किसी भी और चीज की ट्रेनिंग उनको नहीं मिली है. हम बहुत ट्रेनिंग करते हैं, 5 दिन की ट्रेनिंग है जिसमें डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर, full from how to run a brokerage, how to run a listing, how to get technology, everything is very important. Another thing which is technology. Lead management is a very difficult task. We provide you a free CRM, absolutely free CRM comes to you. So all these pieces create a huge amount of differentiation. So why are we here today? What are we looking at? First, I will explain you the Remax model. So Remax Global has the control of the brand. Remax Global gives rights to Remax India, which has master franchise rights for all of India. Then we have Remax offices. These are broker owner offices, which are independent franchisees. These franchisees put 15-20 lakh rupees to take a franchise and put up a nice office. And then we have affiliates who work in these offices. And the good news is that this affiliate gets 50% of commission from the broker owner. So broker owner shares 50%, in some cases more also, to the affiliate. So that's how this business model works. So friends, what are we doing today? We are looking for aggressive, very ambitious partners who would become affiliates, or they want to become even a franchise owner. Both are in discussion, but people who have that kind of ability, they have that kind of passion, they want to really work hard, they are the people which we are looking at. And particularly because I have a very big inventory which has come in, I'm looking to have some of affiliates work directly with Remax India. So we are looking for, rather I'm creating a club which is about 100 top performing affiliates which would work directly with me. And I am creating this whole direct club which drive and get the best of the best to work with us.
So if you are interested, the joining fee for Remax is only 35,000 rupees, only 35,000 rupees. But that's not important for us. Important is who we are dealing with. Money is not, anyway, it's very, very small. So it doesn't matter if we put that money behind anybody who's great person to work with. So I'm looking for very aggressive, very committed, very good profiles, and also strong integrity, people who can be trusted, because end of the day, we are investing on that person, investing on leads, investing on inventory. If you have that integrity, if you are really serious that you will do your best work and you will do the even service your clients right, then this can be a life-changing opportunity for you. Imagine you getting 50% of the commission and you getting all the infrastructure coming to you. If you had to start your own real estate broking company, then this cost would be higher than that 50% which you are sharing. So technically, you are actually getting everything, and you are also getting 50% of all commissions. Typically, a good broker can make 2 transactions a month. 2 transactions would mean the earning potential would be anything low as 2 lakh rupees to maybe 5-6 lakh rupees. So 50% of that money is a very, very good income, which you can do when you become part of Remax. Even you do 1 transaction in the first, you cover your cost of joining, cover other cost and that thing, and you are ready to go in the market. So friends, if you're genuinely interested, if you're really interested, and especially you want to join with me and also work with me at different levels and different opportunities, then write to me directly. I am putting my direct number where you can send me a message. I will make sure that somebody reaches to you by tomorrow itself. And then we have a joint call to see if you can be qualified to join Remax. Again, I'm saying, for me, there is no roadblock of money. I am only interested in getting the topmost partners to come in. So friends, this is an opportunity for all of you to be part of this network. And if you are genuinely interested, then please reach out to us, and we'll be more than happy to have a discussion. And if you are interested in even becoming a franchisee, that also is open. And if you have any other association you feel you want to do with Remax, very, very happy to have a discussion further with you. So thank you very much for your time. Thank you for joining in, and look forward to discuss with all of you. आप सब में से जो लोग मेरे साथ बात करना चाहते हैं, जल्दी मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करिए, and we'll be more than happy to take discussions ahead. Thank you very much.